Today we will be talking about the very important topic, the topics of ethics of disagreement. This topic is very important. The it Why it is important, because Islam has given this very importance to this topic, ethics of disagreement, and it happens with s- Sahaba. It happens with Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, where there were the disagreements. So, how to resolve all these conflicts? Ethics of disagreement. That means, what are the ethics? The Arabic word for ethics of disagreement is adab ikhtilaf. Adab ikhtilaf is basically you have a differences. Adab means basically with respect. So there may be difference of opinion or disagreement, but there is a line in Islamic that is known as adab. So because of not following the adab, and ikhtilafs or disagreements are there, and it becomes into the conflicts. So how we can draw the line of adab of disagreement, that is most important. And we will be talking about in our especially in the school perspective as well as in our own lives. There are two beautiful books written on this topic: Adab Ikhtilaf fi al Islam by Dr. Tahir Jabir Al Wani, and second book is written by Sheikh Yusuf Al Khardawi. So these are the great authors, those who have written the book on Adab Ikhtilaf, that is ethics of disagreement. And as I have said, that there are a lot of disagreement between the people, and we should encourage disagreement, because disagreements take you to the next level of corrections. That is the most important thing. And we should patiently listen to the people who disagree with you, because their point of view may be different, the way they tell you may be different. Maybe you start in your mind that the person what he is saying is wrong. What happens generally about the disagreement is that we are doing some work and we plan some activity within our school, and somebody comes and say that this is not the way to do it, and this is the way to do it. The human tendency is that when somebody comes and criticize or give another point of view, or different point of view for your work, what you have already planned, the mind start giving the calculations. That's the biggest thing happen, the disagreement, where you say that, okay, I have planned all these things, keeping all these thing in mind, and I started creating this idea, maybe a school, and somebody comes and say that this is not the way or that is not the way. How they can disagree with me, because I have put lot of effort on this? So for that, you have to take a pause and listen to the person who disagree with you. I totally agree with that. Every point what he may raise, you can't accept that. That is one point. But listening to those points is most important. The conflict start when you start arguing, because your mind reacts and say that keep the person who is giving the idea just now came in and he doesn't have the knowledge of that subject, and he start giving me the idea. That's why I'm disagreeing with it, and we started conflict with that. So disagreement changes into conflict because our mind is start reacting with the answers or the question given by the other person. So how we can resolve this? It's very easy to resolve. First of all, the person who comes and give the idea, please try to listen to it. I am not saying that he may be right, he may be wrong. As a leader, as a principal, as a administrator, as a school, the ideas may come from your teachers,
the ideas may come from your parents. Sometimes parents come and say that you do this, you do that, but you know that it is not practically possible to implement all those things. But you take those ideas and say that thank you, we are going to look into it, and if possible, we are going to consider it. That is the best way to react for any disagreement of the person. That makes you not only smoothly run the school atmosphere, also carry out some of the suggestions given by your team member because they are practically implementing things on the ground. This time you may disagree with that person, but in the other and third or fourth meeting, she or he may come up with a new idea and you love that idea and have to be implemented. If you start your disagreement into argument, what will happen is that the person will never share, or the team members will never share their ideas with you. And this happens and they listen what you have communicated, though they go and implement. They may have some better idea, but they will say that if I share my idea, the principal or the administrator don't like my ideas. That's why there is a disagreement. Why should I talk about this idea? Let us do what she want or he wants, and they will do that work. So try to understand this. I will give you one of the example when there was a disagreement between Abu Bakr Siddiq and Umar Raziallahu Ta'ala anhu. The disagreement was that, as you aware, all are aware that Khalid ibn Walid was a general and he was given free hand by Abu Bakr Siddiq to conquer the areas and to make a decisions on his own. Not every decision, but some of the decisions. Abu Bakr Siddiq Raziallahu Ta'ala has said that you can take some of the decision. Like one was the decision was capturing the person of other territory and giving him the punishment. But there was a disagreement by the Umar Raziallahu Ta'ala anhu, and he said that I disagree with this point because you are the Khalifa. The decision has to be taken by you, not by the commander who is under your command. Then the both discuss those points on that issue, and Abu Bakr Raziallahu Ta'ala anhu says that suppose Khalid ibn Walid, who is fighting around nearly about 500 kilometers or 1,000 kilometers away from this point, and once he capture, we don't have any communication method like what we have today or something like that. It will take another 20 days, 30 days to take a decision to do, not to do, and it will make lot of conflict within the territory. So he is the best because he is also a Sahaba, he can take the decision. But Umar Raziallahu Ta'ala disagree with his point. He says that yes, you are the Khalifa, you can take the decision. I bound by your decision about allowing Khalid ibn Walid to make a decision there. But my disagreement is this: if I become the Khalifa, I will not allow Khalid ibn Walid to work like this. So, this is the ethics of disagreement, that you have presented your point, but because he is the Khalifa, he has to take a decision. And he said that you are a Khalifa, I bound to your decision. But if I am Khalifa or I am an administrator at that point, I would have not allowed this to happen. So, adab-e-ikhtilaf is this, where you have your boundaries because you know to whom you are talking to, you or the teachers or the principals or your staff or your parents should know the adab. They should know their boundaries, putting their point of view, and that is the beautiful way. And you have to train them. You have to train them in your meetings and say that you have to present your point of view, maybe right or wrong, but make sure that the point of the points what you put should not overlap or should not be insisted to be considered.
That is the most important point. You have to educate your staff members. A peon can have some idea, a cooking staff can have some idea, even a security guard, because he understand how the things work at the gate. He may have a better first hand information because he is looking thousands of people, or hundreds of students coming in and out. He may have a better solution. As a administrator, we are sitting in the office, we may not have the better solution, but taking his point of view is most important. Or cleaning of the toilets in our schools, may the cleaner has better solution than us. So this is the way a school should be run, and this is the point of view has to be added value to your system. And therefore I request every principal, please give liberty to present their point of view. Generally we only have a meeting with our teachers, and we don't have our meetings with our non-teaching staff. Maybe your aya, maybe your cleaning staff, maybe your security guard. So I request all the administrator, those who are here, please have meetings with them also. Try to understand them. Try to ask them what are the things can be betterly done in our school. So they may have some good solutions. I am not saying that you should agree for all the solution provided then, because you are a leader, you can take the best of the solution from them. So it is very good to have an ikhtilaf. So adab is also very important part. So ethics comes with Islam teaches ethics of disagreement. That is the beauty of Islam. Otherwise, there is disagreement with the governments, there is disagreement with the people, there is disagreement within the family. As you know, we already living in a family system, and we also know how disagreements converts into conflicts. And once it's convert into the conflicts, it is very difficult to handle, and people fix their mindset, and they don't want to change. So disagreements can be changed, but conflicts, it's very difficult. You should have the art of solving the conflicts through negotiation. That is also an one type of expertise where people negotiate, talk to each other, and solve the conflicts. So it is a day-to-day activity within your school, within your bus driver, within your parent, within your stakeholders. I am talking about all the stakeholders of your story. It can be a building owner, it can be a government official, it can be a bookseller, it can be XYZ. There are thousands of people will be interacting to a team leader or a management of the school. But how you are going to solve it? That is the most important art. And making solving those problem with ethics is make your school beautiful, make your atmosphere beautiful, make your environment beautiful, make the student to understand what are the things to be done, not to be done. So these are the things you have to keep on teaching. And it's very important topic nowadays, how we teach our students English, Maths, and Science. Please teach also ethics of disagreement. A child may disagree with other child, but how to sit in a class if you disagree with him or with her. So this is also an art, because we make our minds saying that friend is not good, and we start pushing those and drawing the lines that we don't want to talk to them. It happen within your staff rooms in your schools, where one or the other teacher disagree with somebody and they stop talking to each other. So look at around, talk to them, make them as a team, start them sitting in a right manner and clearing their doubts that this is not a conflict, this is disagreement. And disagreement is one of the best thing to have it, because disagreement make you to do the necessary correction. Otherwise, everybody comes and talk about for your happy moods, what a good school, what a good efforts you are putting, what a Islamic curriculum you are teaching, all those things people
talk about good about you, you feel happy about it. But you start looking at the people, you start looking at your teachers and say that, okay, you have already talked good about me. What are the one or two corrections or disagree with me where we can make a correction and run our school in a better manner? So there can be a small things that can affect your school performance. So that are the disagreement points. So identify those points, talk to each and everyone, write down those points, how you are going to provide a better solution. This is the way the ethics of disagreement work within your school. And sincerity and good intention you should have as a leader. You should never think of that your teacher is disagree because she want to take your position or she want to disrespect you. Generally what happen is that as a leader we think that somebody, a smaller person, give an opinion or disagree with you, you may be thinking that how he can go with that. So please maintain that, look at his sincerity and as well as his good intention. If she or he has a good, you can understand that when she's or he says the point, because you have become the leader, you have come through a different work culture already, you have put your efforts in so many years, you can easily understand that the sincerity or the good intentions are there in her or his disagreement. Respect other with dignity, it's most important. You should respect others with dignity. And second important, reaction without evidence and reasoning. Somebody comes and says something about someone and you react it, please take a pause, try to find some evidence. You should be neutral. Somebody comes with the complaint, you should be neutral. What you should say that, right now I am not saying that you are right, I am not saying you are wrong. If you have a point, give me some evidence. One thing is that then the evidence provided should be cross verified and check. Because of my intention is wrong within our school, I may accumulate some evidence or false evidence against somebody, or half truth or a half line, something has been said, but I am picking some keywords from that sentence and adding something from my side and explaining to the leaders. That happens generally. So it has to be look into those perspectives and make sure that once you talk to them, please be neutral and say that, okay, you have given me the information, let me cross check and verify, then only I can provide you the solution. And avoid turning differences into divisions. There may be differences but making difference divisions. What happen is that three or four people within your school may have differences, but they make one division. It should not happen within your schools. Any division will be a loss for any organization because it will affect your vision mission running of your school. So please avoid these divisions within your differences. So maybe differences are there, four different people should not combine together and make a division against the school. That is also an important part. And make a difference between essential and non-essential. There are essential things and there are non-essential things. So please remember that what are essential things where disagreements come, and there are some non-essential things where you have a disagreement, it does not affect any working of your school. And remember the higher objectives, unity of the ummah. That is most important. As you know, I will give you the example of a football match. There is teams are playing. To make a goal, people use different methods. They may sideline the other team members, they may just kick with the leg, or they may put a leg to get the down other players. So this happen, and as a visitor or as a spectator we see that the team is doing wrong.
but still look at the referee. Referee will never give yellow card to each and every fall. And as a spectator, we say he should give the yellow card or he should give the red card. But the purpose of giving yellow cards or red card is not the process of a referee. The referee process is that to complete the game within 90 minutes and get the results. So same thing happen within your schools. You cannot, you know that that person is wrong doing something, but sometimes some teachers come and say that you are not taking any action on it, or you are not giving him the memo or a red card or a yellow card. You can't do that. You can understand as a leader, but try to convince the other party what is the reason behind it, why you are not able to do that. That is also an important part of it. So माफी चाहता हूँ सर, थोड़ा माफी चाहता हूँ सर, प्लीज। हम बोलिए लोग सर। उर्दू वाले भी हैं कुछ। अच्छा अच्छा, आधे ओके घंटे हो गए लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। ओके। इंशाल्लाह मैं उर्दू में भी थोड़ा कवर कर लेता हूँ, अभी है ना टाइम अपने पास में। तो ये एथिक्स ऑफ डिसएग्रीमेंट जो चल रहा था, ये जो है इख्तिलाफ जो आपका है और अदब इख्तिलाफ, एथिक्स का अदब के साथ में आपका इख्तिलाफ होना ज़रूरी है। तो ये जो निज़ाम है, ये इंसानी निज़ाम है, इंसानी फितरत है एक दूसरे से इख्तिलाफ होना। और ये हमारे स्कूल के अंदर बहुत इफ़ेक्ट करता है इख्तिलाफ का होना और इख्तिलाफ के तरफ से। इस इख्तलाफ को हम किस तरीके से कम किया जा सकता है, मैं वही बता रहा था इंग्लिश में। तो हमारे टीचर्स से हमारा इख्तलाफ हो सकता है, हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना ज़रूरी है। उसके लिए हमको सबसे आसान तरीका ये है कि हम किसी भी चीज़ को न्यूट्रल रहे, एज ए लीडर हम ना उसको सही माने ना गलत माने। जब तक आप उसको सही मत मानिए, जब तक आपके पास में एक बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए सबूत आ गए हैं, या उस चीज़ के खिलाफ जो है आपके पास में बहुत सबूत इकट्ठा हो गए हैं। तो कोई लोग आते हैं, कोई बात बोलते हैं और बोलकर चले जाते हैं, तो हम उस पे डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से जो इख्तिलाफ है वो कॉन्फ्लिक्ट में, यानी वो आपके एक दूसरे में बहस का मरकज बन जाता है। और वो मरकज की वजह से परेशानी ये होती है, हमारा जो विजन मिशन है आपका लीडर का एज ए टीचर और प्रिंसिपल या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, वो पूरा आपके स्कूल के परफॉर्मेंस में इफेक्ट करता है। और आप अपने स्कूल की मीटिंग्स में ख़ास तौर से इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपके जो टीचर्स है, आपके जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। वो बात आपसे ये हो भी सकती कि आप वो बात पे राजी हो, या वो बात उल्टी भी हो सकती है। लेकिन एज ए लीडर आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सुनते हैं तो बेटर डिसीजन लेने में आसानी होती है। बार बार हम हमारी टीम मेंबर्स जो होते हैं, हमारे टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ, अगर हम उनकी बात को दबा देते हैं और हम उनकी बात को सुनते नहीं हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो सिर्फ आपकी बात सुनकर उतना ही काम करने जाते, लेकिन उससे बेहतर करने का उनके पास में कुछ आइडिया रहता जो बच्चों को फायदा पहुंचा सकता। वो बात वो आपको नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते क्योंकि आप के पास में एक माहौल ये बन चुका है ऑफिस में कि भाई हम जो बात बोलते हैं वो जो है डिसएग्री होने की वजह से प्रिंसिपल सर या एडमिनिस्ट्रेटर सर हमारी बात को रद्द कर देते हैं। तो आपका इख्तियार है किसी बात को रद्द करने का, किसी बात को एक्सेप्ट करने का। ये बात भी आपको उनको समझाना है कि हर बात आपने जो कही वो हम एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं है, हर बात वो कही रद्द करना भी ज़रूरी नहीं है। तो ये माहौल अगर हम हमारे स्कूल में बनाते हैं तो कुछ चीज़ें हमारे पास में बहुत करेक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि मैं एक एग्जांपल दे रहा था, जैसा आपका एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो वो डेली उसके आगे सामने से और आगे से जो लड़के लड़कियां या बसेस जाते हैं, वो 300 से 400 लोग डेली आते जाते हैं। तो उसका नज़रिया, सोचने का तरीका और चीज़ें जो है अलग रहती है। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हम जब ऑफिस में बैठते हम वो चीज़ से रूबरू नहीं होते हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना, बेहतर हमारा सिक्योरिटी सिस्टम को वो करना। तो अगर हम उनकी बात को सुनते हैं, और अमल करना नहीं करना वो आपका इख्तियार है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है। और वो हो सकता है कि वो बोले सर ये जो काम कर रहे हैं ये तरीके से नहीं होता सर, इस तरीके से हो। तो आपको उस बात को भी
याद रखना है ये जो इख्तिलाफ है वो अदब इख्तिलाफ है, वो भी ये चीज़ चाह रहा है कि स्कूल में कुछ चीज़ें बेहतर हो। तो वो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बोल रहा है तो वो आपके स्कूल के फायदे के लिए बोल रहा है या उससे आपको नुकसान होगा। अगर नुकसान होगा तो आप वो चीज़ को समझकर वो चीज़ को अमल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ अगर फायदे हो रही है तो आप उसको अमल करने के रास्ते में लाएंगे, क्योंकि अमल करने से आपके स्कूल में एक बेहतर माहौल बन सकेगा। तो ये चंद चीज़ें थे जो इख्तिलाफ इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, और ये हमारा डेली का रूटीन है, ये स्कूल के हद तक नहीं, हमारे अपनी ज़िंदगी में, हमारे घर की ज़िंदगी में भी चलता है। लेकिन अदब के दायरे में रह के इख्तिलाफ किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस्लाम ही इस बात को बताया है कि अदब के दायरे में इख्तिलाफ को किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। तो इसमें है, मैं एक किस्सा सुना रहा था अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसमें दोनों के बीच में एक इख्तलाफ था कि खालिद इब्ने वलीद के पास में जो पावर्स है वो ना दिए जाए, वो अबू बकर सिद्दीक ने ज़्यादा पावर दिए थे। तो इख्तलाफ ये था कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कहा कि भाई इतना अच्छी पावर मत दीजिए क्योंकि आप खलीफा हैं। तो अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहना ये था कि भाई वो जहाँ पर जंग लड़ रहे हैं वहाँ का माहौल, वहाँ के सिनारियों को देखते हुए, क्योंकि वो भी एक सहाबा है, तो उसको देखते हुए वो डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि किसी भी डिसीजन को लेकर मेरे पास में अप्रूवल तक आने के लिए एक वक्फा लगता है, 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, उसमें वो चीज़ कुछ गड़बड़ आ जा सकती है, इसीलिए मैंने वो अख्तियार उनको दिया हुआ है। जब ये इख्तलाफ था तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी आप खलीफा है, मैं आपकी बात से ये हूँ, राजी हूँ कि आपने जो कहा वो सही है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे खलीफा होता तो मैं ये चीज़ नहीं देता। तो उन्होंने अपनी बात अदब के दायरे में रखी और बताई कि ये चीज़ मैं अगर खलीफा होता तो नहीं करता था। तो ये सारी चीज़ें हमको भी सीखना है, और ये आज के दौर का सबसे बड़ा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से जो इख्तिलाफ होता है, ख़ास तौर से छोटे छोटे चीज़ों पे हो सकता है, उसके बातचीत पे, उसके टिफ़िन पे, तो जो बातचीत हो रही है या चीज़ें दूरियां हो रही है, ये इख्तिलाफ का एक नज़रिया है। तो वो इख्तिलाफ के नज़रिए को, और वो जब नज़रिया बड़ा बनता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में, यानी कि हम वो इंसान को गलत समझना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा अपना जो इख्तिलाफ था वो जाके कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चंद चीज़ें थी जो आप अपने स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं। करने की वजह से फ़ायदा ये होगा कि आपके स्कूल का माहौल बेहतर होगा, आपकी टीचर आपके सामने खुल के बात कर सकेगी, और वो अदब के दायरे में आपको कुछ चीज़ें बता सकेगी। वो करना नहीं करना वो आपके इख्तियार में है, तो आप उसको कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो ये चंद बातें मैं बताना चाह रहा हूँ था आज के सेशन में। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन में मैंने अपनी बात को रखी है, तो हो सकता है कि इससे आपको फ़ायदा हो। तो इंशाल्लाह हम अनदर 5-10 मिनट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए रखेंगे। आपके पास में इससे रिलेटेड कोई सवालात है तो ज़रा पूछिए। इंशाल्लाह अगर मेरे पास में जवाबात है तो इंशाल्लाह मैं उन जवाबात देने की कोशिश करूंगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Jazakallah khair. Thank you so much for your session. The floor is now open for question and answers. You may go ahead and raise your hands. किसी को कुछ सवाल हो तो चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं या अनम्यूट कर सकते हो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, कभी-कभी ऐसे होता है कि स्कूल के अंदर मोस्टली है ना, कोई एक ही टीचर को काम देने में आता है, मतलब गलती से भी होता है वो। तो दूसरे जो टीचर्स हैं उनको कभी-कभी ऐसे लगने लगता है कि अरे हमारी डिमांड मतलब कम हो रही है, उन्हीं को काम बोल रहे हैं, उन्हीं को ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ऐसे वक़्त में उन्हें कैसे समझाएँ? कि ये गलत है कि हम सभी को मतलब सेम कंसीडर करते हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, हमारी नज़र में तो सब टीचर सेम ही हैं।
Sir, you're on mute. Did you get the question? One second. जी सॉरी, मैं एक कॉल पे था, मेरे बॉस थे। जी जी, आप एक बात बताएं कि जो आप काम कर रहे हैं सारा काम आपको दिया जा रहा है, तो ये ऐसा होता है, ये हर ऑफिस का एक निज़ाम होता है कि जो करने वाला रहता है उसी को सारी चीज़ें दी जाती है। तो ये चीज़ को रिजॉल्व करना और लोगों से काम कराना, ये एक लीडर की सलाहियत है, और इसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। और ये चीज़ लीडर को मालूम भी रहती है कि बार बार ये चीज़ होती है। हमारे ऑफिस में भी एक है हमारे पास में, सादिया बोल के, हम उनको जी जिंदा सर। तिलिस्मात बोलते हैं। कुछ भी चीज़ रहे तो हम जो है, एवरीथिंग डिपेंड अपॉन सादिया। तो बाद वक़्त हाँ, बाज कैरेक्टर उस excuse तरीके me, से sir. तैयार हो जाते हैं। हेलो। Yeah, can you hear me? यस। No, sir, क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से था जी कि ये जो मैनेजमेंट वाले जिन्होंने क्वेश्चन किया है ना, जी उनके पास ऐसे कोई टीचर्स है जिनको वो उनमें से एक को ही काम अक्सर देते हैं। जी ओके, कभी गलती से भी या कभी उनको, तो दूसरे टीचर्स को ये लगता है कि हमारी डिमांड कम हो रही है, तो जी, उनको कैसे समझाया जाए वो टीचर्स बराबर। को? आ, जी। उसके समझाने का आसान तरीका है, आपको उनकी सलाहियतों के हिसाब से कुछ काम उनको भी देना पड़ता है। बाद वक़्त जो काम नहीं करते उनको ये लगता है कि मुझे कुछ काम नहीं दिया जा रहा है। लेकिन एज ए मैनेजमेंट हमेशा एक चीज़ को याद रखिए आप, हो सकता है कि आप जो टीचर को वो काम दे रहे हैं उससे ये कॉन्फ्लिक्ट या इख्तलाफ पैदा हो रहा है विद इन स्कूल। तो ऐसे दूसरे काम दीजिए उनको, और दो चार काम दे के देखिए कि भाई ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हैं। लेकिन उसको कंट्रोल, यानी कि आपको समझ में आता है कि वो नहीं कर पाएंगे, नहीं हो सकता, तो उनको थोड़ा गाइड कीजिए। और वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज, ये मैनेजमेंट स्किल है, वो करना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एक की डिपेंडेंसी भी अगर हो जाती है तो उस स्कूल में बाद वक़्त ये होता है, किसी वक्त वो मौजूद नहीं होते हैं तो दूसरे टीचर्स जो है, आप वो टीचर नहीं है ना, हमारे को क्या काम देते हैं, अब इन्हों काम दिए तो अपन नहीं करेंगे, बार बार उनको ही दे रहे थे बोल के, इस तरीके का होता है। तो काम में डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज़रूरी है, और लीडर की ये सलाहियत है कि आपको हर एक से काम लेने आना चाहिए। जी, जज़ाकल्ला सर। Do we have more questions? Anybody would like to ask anything? जी हमारा एक क्वेश्चन है। सर, मैं जी इफ्तिखार झारखंड से, मैंने आपको उर्दू पे टच किया था, सॉरी उसके लिए आपको। लेकिन बहुत उर्दू में जो आपने बताया वो बहुत काम की चीजें थी वो। एक एक क्वेश्चन है सर हमारा कि जी कुछ टीचर्स क्या होते हैं, अभी तो मेरा नया नया स्कूल है, लेकिन कुछ टीचर क्या करते हैं, जैसा आपने कहा कि सुन उनकी बातें सुनना है, तो हम सुनते हैं। बाद दफा वो आउट ऑफ सिलेबस या आउट ऑफ स्कूल की बातें ऐसे लेकर आते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, और हम उसको इग्नोर करते हैं। ये होते होते बाद दफा ऐसा लगता है कि उनको हमारी बातें तो सुनी ही नहीं जाती है। फिर हम जी उसी पॉइंट पर आकर के खड़े हो जाते हैं। जो आपने कहा कि टीचर को ऐसा ना लगे कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बात आखिर में वहीं आ जाती है, क्योंकि अक्सर बातें आउट ऑफ सिलेबस होता है या फिर आउट ऑफ स्कूल होता है। तो ऐसी सूरत जी। में क्या करेंगे हम? उनको कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। वो एक्टिविटीज़ जो है इस तरीके से हो सकती है
कि आपका एक्सपीरियंस करेक्ट है कि आप वो नज़रिए से जो देखते हैं उनकी बताने की चीज़ को अमली तौर पे नहीं पिनाया जा सकता है। तो बात चीज़ों को जो है वन टू वन आपको बुला के आपने ये बात कही थी इस तरीके से ये बात सही है, लेकिन हमारे स्कूल में जब ये इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो ये दुश्वारियां होगी। तो उनको वो क्लैरिफिकेशन अगर आप थोड़ा सा देते हैं तो उनको ये बात समझ में आने लग जाती है कि भाई इसी वजह से इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपकी बात को हम लोग ने वेल टेकन लिया, आपने बहुत इधर उधर की बात की, वो बात हमको नहीं बताना है, लेकिन उनको थोड़ा अप्रिसिएशन करते हुए हम ये दायरे में रहते करें तो वो करेक्शंस, क्योंकि वो अभी टीचर बने हैं, आप जैसा बता रहे न्यू सिस्टम में हैं, तो बाज़ वक़्त वो विजन और मिशन से अलाइन नहीं रहते और वो चाहते हैं कि हमको सारी चीज़ मालूम है और हम ये चीज़ें बता रहे हैं। तो उनको आपको बार बार इस बात को आपके रास्ते पे लाना पड़ेगा। वो लेफ्ट में राइट में जाते रहते हैं, लेकिन आपको बार बार पकड़ कर उनको इस रास्ते पे लाना पड़ेगा। और वन टू वन अगर आप जब बात करते हैं तो ये चीज़ें सॉल्व होने की ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि मैंने देखा है, मैं तो 204 स्कूल चला रहा था, मेरे पास में 7,000 टीचर्स थे। तो मेरे स्कूल में, और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में था, तो मुझे मालूम है कि कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से काम करता है। बाद वक़्त जो है बड़ा नेटवर्क था मेरा, तो बोल तो 204 में आप समझते 1,20,000 बच्चे थे, और जिसमें जो है मेरे अंडर 7,000 टीचर्स थे। तो डेली कॉन्फ्लिक्ट होना, चीज़ों को वो करना, तो उनको मैं वन टू वन बुलाकर चीज़ों को सॉल्व करता था। तो आसानी से बाद वक़्त सॉल्व हो जाती थी। लेकिन बात फितरतन रहते, तो फितरतन को आपको वक्त लगेगा चेंज करने में। लेकिन 70% लोग तो सुधर जाते हैं, लेकिन 30% हमेशा आपके स्कूल में ऐसे रहते हैं। वो आप कितना भी करें फिर वही जाके वो अपनी जो है कि नहीं नहीं वो सब सार बताए अलग है, मैं जो है वैसी तरीके से किया जा सकता है, तो फिर उनको आपको कोई ना कोई पनिशमेंट या एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जी जी जी, शुक्रिया, बिल्कुल। जजाकल्लाह खैर। अगर कुछ नहीं है तो वी कैन क्लोज डाउन। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आई एम वाह। हैविंग अगेन वन या प्लीज प्लीज। क्वेश्चन। एक्चुअली वी डिवाइडेड ड्यूटीज। मतलब हम्म। कि ऐसा हो रहा था कि सुबह में जब बच्चे आते हैं, हम लोग का स्कूल छोटा है, जी तो स्टेयर है ना जरा इसकी आयन की बनी हुई है, तो गिरने वगैरह का डर होता है। तो उसकी वजह से पेरेंट्स की जब कंप्लेन आई तो हम लोग ने ड्यूटीज डिवाइड कर दी टीचर्स को कि जी पर्टिकुलर 5 से 10 मिनट्स जब असेंबली होने के पहले है ना, ये टीचर यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। जी लेकिन थोड़े दिन टीचर्स ने उसका इम्प्लीमेंटेशन किए, और ऐसा होता है कि उस वक्त में ऑफिस में पेरेंट्स वगैरह आना, तो मेरा ध्यान वहां से थोड़ा हट जाता है। जी तो फिर टीचर्स को बाद में जाकर उनको पुश करना पड़ता है कि अरे आप लोग की ड्यूटीज है, आप क्यों नहीं खड़े। जी ऐसे कुछ मसले आ रहे। और अभी 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं अवेलेबल नहीं थी। तो जी सीनियर टीचर्स को पता चला कि जो जूनियर टीचर है वो एरोगेंटली बात कर रहे जी टीचर से भाई लेट क्यों हो गए, लेट आना वगैरह, आप टीचर नहीं है 2 दिन, बड़े टीचर नहीं है तो भाई चलो लेट चलते, कोई देखने वाला नहीं, कोई ऑब्जर्व करने वाला नहीं। जब सीनियर टीचर पूछ रहे हैं तो एरोगेंटली बात कर रहे हैं। जी फिर इस को कैसे हैंडल करें? अब वो इतने छोटे हैं कि मतलब अनमैरिड है, और वो बड़े टीचर से ऐसे बात कर रहे हैं। आ गए तो क्या हुआ, लेट गए ऐसे इस तरीके से। तो जी उनको क्या आंसर? मतलब आज ही मैं गई थी दो जी जी तीन दिन के, तो ये सब इतना हो गया मतलब। जी जी। नहीं नहीं, बाद वक़्त क्या है, देखिए कभी भी तरबियत का निज़ाम नहीं था, वो नौकरी पे ज्वाइन हो गए, तो आप जो है बार बार तरबियत का निज़ाम कायम करना ज़रूरी है। और इंडक्शन प्रोग्राम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ख़ास तौर से मेंबर एकेडमी फोकस करता है कि आप इंडक्शन करते जाइए, क्योंकि ये जो नए टीचर्स आते हैं ये भाई चांस या चॉइस नहीं आते, कंपल्शन आ जाते हैं। बोले तो इनका कोई टीचर बनना भी इरादा नहीं रहता, चांस में भी नहीं रहते। चॉइस भाई घर के बाजू स्कूल है, चलिए टीचिंग कर लेते हैं। तो उनको टीचिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी या बच्चों के साथ में या बड़ों के साथ में, तो ये उनका निज़ाम का हिस्सा ही नहीं था। तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। तो आपको बार बार ये जब इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट आता है
तो आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम वीकली 1 एक्टिविटी के तौर पे रखना पड़ेगा। देखिए, हमारे टीचरों पे भी हमको खर्चा करना है। अगर आप 2 क्लास कम पढ़ाए अलग बात है, लेकिन हफ्ते में आप 2 पीरियड या 1 पीरियड खास तौर से टीचर की टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए करिए, ताकि स्कूल, क्योंकि जो नए स्कूल एस्टैब्लिश होते हैं उसमें क्योंकि हर तरीके के लोग ज्वाइन हो जाते हैं, वो आपके विजन और मिशन के लिए ज्वाइन नहीं होते, वो सिर्फ नौकरी करने के लिए ज्वाइन हो जाते हैं। जब आप वो नौकरी करने के लिए ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको अपने विजन और मिशन से अलाइन करना पड़ता। आपको ऐसा नहीं कि बाहर से जाके तैयार करके विजन और मिशन से हम चॉइस में जो है तरकारी अपने हिसाब से ला सकते कि भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है टीचिंग लाइन में, ऐसा है कि आपके पास में कोई सोल्यूशन नहीं रहता, लेकिन आपको एक टीचर की ज़रूरत है थी। आप कैसा भी रहो, एक टीचर, अभी क्लासरूम में हमारे बच्चे अवेलेबल है, हमारे पास में टीचर नहीं है बोल के हम अपॉइंट कर देते। लेकिन उनके लिए तरबियत का निज़ाम हफ्ते में एक बार ज़रूर रखिए, ताकि उन्हें वो चीज़ को बोले तो उनको बैठकर बात कर कर समझाया जाए। तो हम सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ये सीनियरिटी और ये है, ये आपको ये एथिकेट्स सीखना पड़ेगा, और ये एथिकेट्स हमको ही सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उनके घर के माहौल में भी ये एथिकेट्स नहीं थे। जी सर, जज़ाकल्ला। क्योंकि हम बार बार लोगों को बदलेंगे तो चीज़ें नहीं बदलेगी हमारे स्कूल की। फिर अगर हम इनको हटा देंगे तो हमको ये भी गारंटी नहीं है कि इनसे बेहतर आएगा या इनसे खराब आएगी, है ना। जी सर, रिप्लेसमेंट हाँ, तो इज नो। अब तो आपको कभी भी अपने आदमी का जो आपके साथ में उठ रहा बैठ रहा, तो उसी को लेके चलने में भलाई इसलिए है क्योंकि आपको उसके स्ट्रेंथ भी मालूम है, उनके वीकनेसेस भी मालूम है। तो वो नए दुश्मन से पुराना, वो नए दोस्त से पुराना दुश्मन अच्छा बोलते हैं ना, तो उस तरीके का निज़ाम है बेसिकली। तो आपको मालूम है कि इनको कहाँ पर करेक्शंस किया जा सकता है, क्योंकि आप एक वक्फा इनके साथ में बिताए। तो बार बार आप अपने टीचर्स को भी बदलेंगे तो स्कूल का निज़ाम भी गड़बड़ाएगा, बच्चों का एजुकेशन भी गड़बड़ाएगा। तो इन्हीं को क्या तरीके से बेहतर किया जा सकता है, वो कोशिश हमको ज़्यादा करनी चाहिए। जी सर, जज़ाकल्ला। आई थिंक वी हैव डन। Yeah, we shall conclude. Jazakallah khair, everyone. Thank you so much for your attendance. Jazakallah khair, sir, for a wonderful session and taking the question and answers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।